Assalamualaikum everyone, I am Miss Sarish and welcome to my channel Knowledge Pearls। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और इसके साथ साथ ही हम जानेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की टाइप्स क्या हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग टुडेज़ वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्रोग्राम क्या है। What is program? So we can define program as step-by-step instructions that instruct the computers how to perform a task, or simply we can say that programs enable us to control how machines work. प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि कोई भी टास्क किस तरीके से परफॉर्म करना है। These instructions are written in steps so the computer can follow them quickly and accurately. So we can say that programs are designed to communicate instructions to a machine, particularly computer. Or we can also say that programs are designed to control the behavior of a machine. अब वो machine चाहे rocket हो, चाहे computer हो या smart TV हो। Now what are programming languages? We can define programming language as a set of rules that provides a way of telling a computer what operations to perform. Students, remember that when we give instructions to a computer, we have to make sure that the computer is able to understand our instructions. Otherwise, it will not work properly. Now we will discuss types of programming languages. There are two types of programming languages: low-level languages and high-level languages. First, we will discuss low-level languages. Low-level languages are used to write instructions in machine code, and because of their simplicity, these instructions control the working of computer directly. क्योंकि जो instructions low-level languages में लिखी जाती हैं वो कंप्यूटर के लिए बहुत easy होता है उन्हें समझना। Low-level languages can be divided into two groups: first generation languages and second generation languages. Let's discuss first generation languages. Students, first generation languages are based on machine code and that machine code can be directly processed by CPU. और अब वो machine code क्या होता है? Machine code is a series of bits, zeros and ones. इसीलिए हम इसको binary language भी कह सकते हैं। But it is difficult to write a program in machine language because it requires a lot of attention to detail. Moving towards group 2 of low-level languages, which is second generation languages. Second generation languages are based on assembly language. Assembly language is easier than machine code. असेंबली लैंग्वेज मशीन कोड से इसलिए आसान है क्योंकि असेंबली लैंग्वेज में जो स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं वो सिंबॉलिक कोड्स में लिखी जाती हैं जिन्हें हम निमोनिक्स भी कहते हैं, और ये कोड्स जो होते हैं वो हमारे लिए, यूज़र्स के लिए बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड होते हैं एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स: third generation languages, fourth generation languages and fifth generation languages. So let's discuss third generation languages. Third generation languages were created during 1950s. Third generation languages were user friendly क्योंकि उनमें English words होते थे, plus they were programmer friendly क्योंकि अब प्रोग्रामर्स को यहाँ पर मशीन कोड याद रखने की ज़रूरत नहीं थी। सो राइटिंग प्रोग्राम्स इन थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस बिकेम सो ईजी। Fortran and COBOL are two examples of third generation languages. Fortran stands for Formula Translation. It was developed for writing programs to be used for scientific work and calculations. Nowadays, Fortran is used by engineers, weather forecasters, and scientists. COBOL stands for Common Business Oriented Language. This language is used for business purpose. Now, fourth generation languages.
Fourth generation languages were developed from the 1960s to the 1990s. They were more programmer friendly and user friendly than third generation languages. These languages were mostly used to create programs for business purpose. Examples of fourth generation languages include Visual Basic, SQL, Fox Pro, and Oracle. Moving towards the last topic, fifth generation languages. Students, fifth generation languages are the most recent programming languages. They are used to create programs based on artificial intelligence. Fifth generation languages enable computers to solve logical problems using artificial intelligence. Lisp and Prolog are two examples of fifth generation languages. Simply हम कह सकते हैं कि fifth generation languages are designed in a way in which computer solve logical problems without the need of programmer. आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि कंप्यूटर इज़ अ मशीन एंड कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन लैंग्वेज. कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होती है. कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेजेस, सो देयर इज़ अ नीड ऑफ ट्रांसलेटर. ट्रांसलेटर्स का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.